So today we will be talking about linkage and crossing over, which is the second part. Here we will discuss in details more about this crossing over aspect, and then what we will be really talking about is the 3-point Drosophila crosses. It is former times this used to be a very important chapter, but nowadays people are giving it less importance because of the advent of molecular biology and other particular disciplines of science. So, but still, nonetheless, this is pretty interesting and nice. So, I'll be presenting my PPT. And I would like you people to tell me if it is visible or not. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Visible. So, today's talk will predominantly work on Drosophila 3-point crosses. But before that, we need to understand what Drosophila is. This is the fruit fly. You can see these flies actually whenever you keep a fruit in an open place, and you will find small little flies which are roaming about, and you can see that they have these red eyes, very small. So these are the basically fruit flies. So let us look at what are the events which take place during meiosis and where linkage takes place. Just looking at it in more details. So we consider, let us say a heterozygous, we consider these three genes in the F1, capital A, capital B, capital C. I have not given name to these genes. And these are the dominant, capital A, capital B, capital C, they are the dominant, and small a, small b, small c, they are the recessive ones. And since it's an heterozygous, one copy inherited will be dominant, and one copy over here will be recessive. And so, what happens during meiosis? Recombination takes place, crossing over takes place, recombination takes place. So, there can be, during linkage, frequency of parental gametes are the highest since there is no crossing over. So, the parents are capital A, capital B, capital C, small a, small b, small c. No controversy over here. No crossing over. This is one parental from one another parental. This has been obtained. And so in these two gametes, there is no crossing over. And you get the gamete as such. This particular chromosome taken as a whole and this particular chromosome taken as a whole. So this is known as parental gametes. There has been no crossing over. The second thing takes place is you have single crossover between these three genes. Only among the two genes there is a crossing over taking place. So capital A, capital B, and small a, small b, the crossing over takes place in between these two genes. Result is when it takes place, small a, capital B comes, and capital A, small b comes, and the C part remains the same. So these are known as, these gametes individually, I've circled them. They are known as single crossover gametes. You can find this when the crossing over takes place between B and C. The result is capital A, capital B remains as such, small a, small b remains as it was, and only instead of capital C, it becomes small c over here, and it becomes capital C over here. And this is a single, both of them are single crossover gametes. So, whenever you are mapping three genes, on a chromosome, you can find there are two single crossovers, one parental, and another one which takes place, and that is the double crossover, when crossing over takes place between both of them.
তাহলে the middle gene changes, the middle allele rather changes. You have capital A, small b, capital C. You have small a, capital B, small c. This is known as a double crossover. So between all the three genes, there has been a crossing over taking place. So I'm asking you just one question. What would be the frequency of the parental gamete? Not the numbers. Will it be high or will it be low? Any one of you? Frequency of the parental gamete where no crossing over has taken place. Anybody tell me? It's not a examination. Hi, The sir. physical, Hi. Huh? High High, over very good. It will be high. And frequency of the double crossover, what would it less. be? Less. And single crossover, Um, middle, बीच में रहेगा. Okay, clear? yes, sir. So crossing over, when does it takes place? It occurs in prophase of meiosis 1. So under the microscope, if you squash grasshopper testes or any particular meiotic cells, you will see these are little chromosomes. And in this chromosome, are you able to see this X-like structures? I've shown them with arrows. এই X হয়ে বসে রয়েছে. This point. Are you able to see these points? yes, sir. Those are the points of crossing over where recombination is taking place. So it has been visualized under the microscope, this crossing over. So let us look at the crossing over which takes place during prophase 1. It's the first step in meiosis 1. It's the leptotene or leptonema. The chromosomes are in this position. They have duplicated. One chromosome becomes one chromatid becomes two chromatid. N becomes 2N. C becomes 4C. 2C becomes 4C. So they have duplicated over here. And gradually you may see synaptonebal complexes. Synaptonebal complexes are regions where the crossing over starts to take place. Then comes the zygotine. Here pairing is starts. এখানে মেশানো ছিল, এখানে হয়ে গেল straight. They're aligning with each other. Crossing over starts at this point. In pachytene, the chromosomes thicken and now you can see little crossing over places taking place. Crossing over will take place. Materials from this will come here, materials from here will come over here. Then you have the diplotene. They will try to move away from each other. And this is known as the chiasma complex, X chiasma complex, which is seen. So the chromosomes are held together at chiasma and at the centromere. Centromere may be held there, and it is also held at chiasma. At this stage, crossing over has completed. And in diokinesis, they separate. So you can see mix ho gaya. So the key point is recombination or this crossing is caused by a physical exchange between paired homologous chromosomes early in prophase of the first meiotic division after the chromosome have been duplicated. When meiosis starts to take place, one cross strand of chromosome becomes two strands, even whether it's a sister or non-sister. So each chromosome is essentially a bivalent chromosome. So you have two arms, two chromatids. Then at any one point along a chromosome, the process of exchange crossing over takes place and it involves only two of the four chromatids in a meiotic tetrad. So चार रहता है, इसमें भी चार रहता है. So any इस chromosome में any
2 of them can initiate crossing over, बाकी 2 नहीं करता है. Then late in prophase 1, the crossovers become visible as chiasma. You have seen it in the picture. Now let us look at crossing over. This is a chromosome, capital A, capital B, capital A, capital B, dominant homos. Then this is the recessive one. The crossing over point is taking place over here. Small a, small b, small a, small b. Crossing over is taking place over here. Mixing हो गया. ये दोनों mixing होके what you find is एक arm remains the same as capital A, capital B. So ये जो tetrad है 1, 2, 3 and 4 only it's taking place within 2 of them. 1, 2, 3, 4. So यहाँ पे what you get capital A, small b, already the mixing has taken place. Then the other way around, capital B आ गया, mixing has taken place, but this arm is free. Somebody is coming, trying to enter. नहीं है कोई. Up now, crossing over has taken place. Now gamete has been formed. So 4 products, 4 gametes, they are haploid. ये diploid था, अब ये haploid हो गया. You have the non-recombinant chromosome, capital A, capital B. कोई recombination नहीं हुआ, parental बोलते हैं इसको. ये sperm और ये egg में you find only the parental. You don't find a recombination. Then you have the recombinant, ये वाला arm, ये तो अलग हो गया, बीच से it separates from the center, and this becomes separate. This is capital A, small b. Then you have the recombinant chromosome, again ये वाला arm, it comes over here, and the non-recombinant recessive chromosome. So is this clear? Yes, no? sir. Yes, sir. Yes, sir. So maximum 50% recombination होता है. आधा 50% मतलब क्या? आधा 4 में से 2, वो 50% ही हुआ ना. Yes, sir. हाँ बोलो, क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस? फिर से देख लो. No. खिचड़ी पक गया, खिचड़ी पक के बन गया. Four products of meiosis. Okay, let's move on to the next slide. Chromosome mapping. So, linked genes can be mapped on a chromosome by studying how often their alleles recombine. Like I said last day, if the 2 genes are located close to each other, उन दोनों के बीच में, in between them, a recombination or crossing over, the chance is very low. First slide में जो दिखाया था.
अगर इन दोनों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू जीन्स आर वेरी हाई, then in that case the chance of crossing over taking place in between them is high. So using this principle, मतलब जितना ज्यादा पेरेंटल टाइप्स मिलेगा उसके मतलब है कि the two genes are close with each other, and the more you find the recombinations of crossing over events, the generations, the less chances that they are close to each other, they are far away from each other. So ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, कितना फ्लाइज मिला जो रिकॉम्बिनेंट है, कितना फ्लाइज मिला जो which is parental. So this is they can be mapped by studying how often they can recombine. Recombination study होता है कितना ऑफस्प्रिंग होगा. Say for example अगर तुम्हारा रेड आई स्मॉल विंग्स है, हाँ, आई कलर और विंग्स दोनों में तो you are seeing the difference. There you will see that red eye or if red eye and wing shape, if they are close to each other, then the number of parental ones वो सबसे ज्यादा आता है. हाँ, और अगर दूर है तो देखोगे कि दूसरा रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आ जाएगा. So if you by that you can make a construct a chromosome map like it has been constructed in Drosophila. इसके एक के बाद क्रोमोसोम में all the genes are lined one after the other, and here you find the distance. The distance is measured in recombinant frequency. The distance is not kilometer, millimeter, micrometer. Here it is measured in recombination frequencies. कौन कितना पास है, it's relative. So the distance between 2 points on the genetic map of a chromosome is the average number of crossovers between them. जितना crossovers मिलेगा, that is the genetic distance. So 2-point test cross. So this is a Drosophila which has got long wings and gray body. And this is a Drosophila which has got vestigial wings, black body. अभी 2 points है, let's start. छोटा wings है, body black है. VG plus, B plus. VG plus is vestigial plus, this is wild type. So this is both are homozygous, parental. फिर क्रॉस बना है F1 में, यहां से एक आएगा, यहां से आएगा. VG and small b and VG plus B plus, heterozygous. It is crossed, the test cross is done. F1 इसमें with a total recessive वाला के साथ you make a cross, with the only recessive one you can make a cross. So you have vestigial wings and black body. It is totally vestigial, totally recessive, like this parental. Then what happens? यहाँ पे you find the गुड parental. मॉर्निंग सर. हाँ बोलो. गुड मॉर्निंग बोल रहे सर, बारिश की वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहा था सर. अच्छा ठीक है. तो ये दिस इज लॉन्ग विंग्स, ग्रे बॉडी, वेस्टिजियल विंग्स, ब्लैक बॉडी. सो दीज आर द पेरेंटल. ये देखो, ये दिस वाज द पेरेंटल ओवर हियर. So you get the parental ones निकल आता है. इसमें 820 parentals and 180 recombinant जो मिक्सचर हो गया. हाँ, ग्रे बॉडी और छोटा विंग्स, काला बॉडी और लंबा विंग्स, ये भी निकल आया यहाँ पे. ये मिक्सचर है, रिकॉम्बिनेंट. तो टोटल 1000 में यू गेट पेरेंटल फेनोटाइप. क्योंकि एक तो हेट्रोजाइगस का ये रिसेसिव रहेगा, बिकॉज डोमिनेंट तो डोमिनेंट ही रहेगा ना. So frequency of recombination is 180 recombinants out of total 1000 flies. That is 0.18. And उसके मतलब है कि recombination frequency between VG and B is 18%. And इसको ही बोलते हैं 18 centimorgan distance.
on the genetic map. So 18 centimorgan distance is a distance which is more than 9 centimorgan. अगर दो जीन 9 centimorgan है तो उसका मतलब 9 वाला और भी पास है, और अगर 27 है तो और भी दूर है. So जितना दूर है उतना ज्यादा you will get this recombinants. If the further these two genes are located away from each other, the more number of recombinant classes you will obtain. Clear? Yes, no, बता दो. Yes, sir. Yes, sir. अब 3 point में let us go. So scoot bristles, echinus eyes, and crossveinless wings. 3 characters, 3 genes. SC, EC, CV. ये we are talking, and SC, EC, CV दोनों में ही ये तीनों ही रिसेसिव है. Okay, so this is a homozygous parental. It is now crossed with a male hemizygous. This is X-linked actually. This is an X-linked genes. I'm showing an example. SC plus होता है wild type, EC plus भी wild type होता है, CV plus भी normal wild type होता है. And SC scoot, echinus eyes and crossveinless wings. Wings में कोई vein नहीं रहता है, cross veins नहीं रहता, लंबा लंबा veins रहता है. और echinus eye कांटा कांटा जैसा eyes होता है, कांटा eyes. And scoot मतलब बॉडी में जो उन लोग का हेयर होता है, लंबा हेयर नहीं होता है, एक ब्लॉब 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 छोटा छोटा डॉट डॉट जैसे हेयर होता है उसमें. जिस तरह से थोड़ा निकलता है उस तरह का छोटा हेयर होता है. कोई हेयर जल जाने से जैसे हो जाता है वैसे दिखता है. स्कूट ब्रिसल्स. सो व्हेन यू डू दिस टेस्ट क्रॉस, द F1 generation is like this. हेट्रोजाइगस. एक क्रोमोसोम रहेगा तुम्हारा वाइल्ड टाइप एंड वन इज फ्रॉम द रिसेसिव, एंड इट इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव. हमेशा टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव के साथ इट इज क्रॉस्ड. इन दिस केस सिंस इट्स एक्स लिंक्ड, इन लोग का मेल्स का इट डजंट हैव अ सेकंड एक्स क्रोमोसोम, जिसके कारण दे आर कॉल्ड एज हेमीजाइगस. सो रिजल्ट इसमें क्या होगा? दिस फ्लाई इज अ वाइल्ड टाइप फ्लाई. सो पेरेंटल कौन कौन सा होगा? दिस इज एससी, ईसी, सीवी एक पेरेंटल होगा. एससी प्लस ईसी प्लस सीवी प्लस विल बी वन मोर पेरेंटल. सो द पेरेंटल कैन बी अ वाइल्ड टाइप और इट कैन बी अ टोटल तीनों जीन के लिए रिसेसिव. So you will see scoot, echinus, crossveinless in the F2 generations. When you are counting the flies, you will see among the 3248 flies which were formed in the F2 generation, you will see the wild type you have seen 1455, 1158. So इनका number सबसे ज्यादा है because they are the number is maximum because they are the parentals. And जो मतलब बीच वाला जीन जब ऊपर आ जाता है, व्हेन देयर इज अ डबल क्रॉसओवर, जो सबसे कम है वो है डबल क्रॉसओवर. यू हैव सीन you have seen in the first slide that the double crossover has got the least frequency. So in the ones where you get only 1 and 1, they are the double crossovers. And single crossovers में you get something in between. So these are the parental types, these are the single crossovers, and this is the double crossover. So whenever you get this data in your exam, you will first check which are सबसे ज्यादा क्या है. सबसे ज्यादा जो है that is the parental types. Then सबसे कम क्या है, that is the double crossovers, and the remaining 4 will be single crossover. On the basis of this you can make a map, but you still don't know which is the middle gene. बीच वाला जीन कौन सा है यू डोंट नो. उसका ऑर्डर इसके आगे कौन किसके आगे है यू डोंट नो. You know this is a single crossover, you know this is a double crossover, you know this is a parental, but you don't know which is the middle gene or what is the order of the gene. In this example,
this is the order of the gene, but it can be SC, CV, EC, ऐसे भी ऑर्डर हो सकता है. It can be EC, CV, SC, ये भी ऑर्डर हो सकता है. हाँ, and it can be SC, EC, CV. This order also it can happen. So 3 types of order. इसका 3 permutation combinations हो सकता है order का. You can have 3 types of order, but you don't know which is. From this you can get to see the parental frequency. कौन सा parental है, कौन सा double crossover है, और which ones are single crossover. Any questions? समझ में आया? हाँ सर. बाकी लोग? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब now you Yes, calculate sir. map distance. पहले you see crossover between SC and EC. SC और EC के बीच में you are looking at crossover कितना, SC और EC के बीच में कितना crossover हुआ. Instead of A, B and C, they take A as SC and B as EC. SC अगर ये ऑर्डर हुआ, SC EC हुआ, इसके बीच में you have a crossover, then what will you get? SC EC plus CV plus SC plus EC CV. So this phenotype will be wild type. This will be a wild type. Right? हाँ सर. What will this be? SC आ गया, EC आ गया. दो, just consider these two only. इसको भूल जाओ अभी. यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन आ गया एक, यहाँ पे भी तो रिकॉम्बिनेशन आ गया. यू कैन सी फ्रॉम द फेनोटाइप. ठीक है. Yes, sir. ये एक अलग प्लांट है, ये प्लांट बोल रहा हूं, अलग फ्लाई है, ये भी एक अलग फ्लाई है. दिस इज वन सेपरेट फ्लाई. या आई एम शोइंग यू ओनली वन गैमेट, only one gamete. So the flies which will be formed, it has got the X chromosome in between. Three or four number observed क्या है, 163 and 130. Fine. अब let us look at double crossover. Double crossover वालों में क्या होता है? In this you already have a crossover here, but additionally you have one more crossover. So all the double crossover, the frequency of double crossover are included in the single crossover. सिर्फ single हुआ और उसके साथ double में भी तो एक single हुआ है. So you have to add this over here. So basically you find that this is 1 and 1. Total कितना आया? 295. 163 plus 130 plus 1 plus 1. It is 295. Distance हो गया 3248 plants, 0.091. So it is 9.1 centimorgans. 0.091 morgans. So map distance 9.1 centimorgan. ठीक है? Yes, sir. Okay. Now दूसरे के बीच में, EC और CV के बीच में you are doing it. ये दोनों के बीच में crossovers. This is one in one fly. This is in another fly. You look at the phenotype and then you can see कौन सा phenotype होना चाहिए. Only the dominant में आएगा. जहां पे दोनों ही recessive है, only there you can find. इसका जो opposite में जो रहेगा, that is all recessive because you have done a test cross. हाँ, small SC, small EC, small CV रहेगा. 5 and 6 ये तुम्हारा क्लास 5 और 6 में तुम देखोगे 192, 148. एंड इन डबल क्रॉसओवर्स वो तो सेम ही रहेगा 1 1. सो टोटल मिला है 342. सो मैप डिस्टेंस 10.5 सेंटीमॉर्गन्स. सो एससी और ईसी के बीच में 9.1 और ईसी और सीवी के बीच में 10.5. तो ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस हो गया ना. Yes, sir. एससी और सीवी के बीच में डिस्टेंस, इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम 9.1 प्लस 10.5, एससी और सीवी के बीच में डिस्टेंस आएगा. ये एडिटिव डिस्टेंस है. क्लियर? Yes, sir.
यस सर। सर सर नाउ हाँ बोलो। सर जो सिंगल क्रॉसओवर करा रहे हैं उसमें तो नंबर सेम होना चाहिए। हाँ, दोनों अलग अलग क्यों आ रहे हैं? कहाँ पे अलग आया है? सर एक में 192 है, एक में 148 है, तो नंबर तो सेम होना चाहिए, दोनों तो वेरी सिंगल ही गुड हो रहे हैं क्वेश्चन, बहुत सिंगल अच्छा क्रॉस। क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक फ्लाई का, हाँ, 100 बच्चा हुआ, ठीक है ना, एक फ्लाई का 100 बच्चा हुआ, हाँ, तो 100 में से 100 बच्चा ही की जिंदा रहेगा? नहीं। नहीं सर। तो दिस इज ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन में इसमें थोड़ा सा कम आया, सेम नहीं आया, सेम होना चाहिए थियोरेटिकली। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड वन साइड, यू हैव वन साइड एक्सपेक्टेड, योर एक्सपेक्टेशन दोनों सेम, ठीक है, Yes, sir. बट ऑब्जर्वेशन में नहीं मिलता है। तुम देखोगे कि इसका कुछ ज्यादा कम बच्चा आया इसका, इस तरह का। हाँ, एक माँ बाप का 4 बच्चा, बाप काला है माँ गोरा है, हाँ, दोनों का 4 बच्चा हुआ। हाँ, तो तुम क्या 50-50% जो बच्चा हुआ, दो दो बच्चा गोरा होगा, 2 बच्चा काला होगा? नहीं सर। ऐसे नहीं दिख सकते, तुमको ऐसे भी दिख सकता है 3 बच्चा गोरा हुआ, एक काला हो गया। यस सर। खैर, मतलब गोरे और कालों का तो ये जमाना नहीं है, ये सिर्फ दिल वालों का जमाना है। एनीवे, सो चीज है, इसीलिए दिस इज ऑब्जर्वेशन में हमेशा नहीं आएगा। लेकिन व्हेन यू आर कंसीडरिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइज, हाँ, उसमें से नंबर किसका ज्यादा रहेगा? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं सोच रहा था कोई इतना इतना देर तक पूछा क्यों नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन। उतना ऑब्जर्वेशन नहीं आता है, ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट। ऑब्जर्व वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू वो मिलता नहीं है। बिकॉज एक चीज देखो ना, एक हट्टा खट्टा फ्लाई का, मतलब जिसका सब कुछ नॉर्मल है, चांसेस ऑफ इट सर्वाइविंग इज मच मोर, है ना? हाँ, यस उस सर। वो बन गया, उसका एक छोटा छोटा साला विंग्स लेके पैदा हो गया वो, उसको तो तकलीफ होगा ना, मतलब टू सर्वाइव इट नीड्स एक्स्ट्रा हेल्प, एंड नेचर इज क्रूएल, इट विल नॉट स्पेयर यू, उसको मार देता, तो नंबर थोड़ा सा कम आता है उन लोग का। सो म्यूटेशंस में 3:1 बोलता है मेंडल क्रॉस, बट यू डोंट गेट एन एग्जैक्ट 3:1 रेशियो, बिकॉज टॉल प्लांट्स ऑलवेज आर, नंबर में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा टॉल प्लांट्स, वो सेम उसीलिए नहीं है, बिकॉज ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेशंस दे डोंट मैच। It's like 1,000 you pick up, you got, it's a probability test. हाँ, so ऐसे हुआ, there are thousands of balls, हाँ, उसमें 500 balls is red, 500 blues, तुम 1,000 times 500 times हाथ घुमा घुसाया और बॉल निकाला, और फिर डाल दिया। सो यू विल सी दैट 50-50 हमेशा होता नहीं है कि 500 टाइम्स तुम रेड बॉल निकाला, 500 टाइम्स तुम ब्लू बॉल निकाला। इट समटाइम्स इट कैन वेरी, बट the more the numbers, ये error becomes much smaller. Sample size, the more the sample size increases, this error decreases. Okay, clear सबको? यस हाँ सर। सर। यस सर। Now now you यहाँ पे in this example which I am showing, this is the gene order, middle gene यही था, ये जो order दिख रहा है तुमको, middle gene इसी था, but in your exam what will be you be given, you will be given only this part, ये part दे देगा तुमको, you have to find the distance। तुम इसको देख के तुम मतलब it can be a different gene also। अब मिडिल जीन देखोगे, and find gene order। The two most common classes are the parentals, ये तो हम लोग कंफर्म हो गए। Among the recombinant classes, the two rare classes represent the double crossover। सबसे कम कौन है? डबल क्रॉसओवर।
क्लियर? नहीं, कभी कभी मिलता ही नहीं है डबल क्रॉसओवर. The gene that is switched in the double crossover classes compared to the parental is the middle gene. मतलब बीच वाला जीन जो है, डबल क्रॉसओवर में बीच वाला जीन जो है, नीचे ये स्विच हो जाता है. इट इज स्विच फ्रॉम द अपर टू द लोअर एंड वन फ्रॉम द लोअर टू द अपर. साइड वाला दो जीन रिमेन्स द सेम. सो यू हैव टू टेस्ट. अगर ये ऑर्डर हुआ तो अब मिडिल वाला जीन कहां पे है. एंड ओके, इफ दिस इज द मिडिल जीन, ये ऑर्डर, लेट अस लुक एट दिस ऑर्डर ईसी, एससी और सीवी. ईसी अगर ऑर्डर ऐसे है, ईसी है, एससी है एंड सीवी है, इफ द ऑर्डर इज दिस ईसी प्लस एससी प्लस सीवी प्लस, डबल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर हो रहा है दोनों के बीच में. सो इसमें तुम क्या देखोगे, ईसी एससी सीवी था, ईसी एससी प्लस सीवी हो गया. ओके, मिडिल जीन स्विच हो गया. अंडरस्टैंड? चेंज हो गया. द मिडिल जीन हैज चेंज्ड. क्लियर सो फार? Yes, sir. सो फेनोटाइप क्या होगा इसका? फेनोटाइप होगा इसका ईसी होगा. सो इट विल बी, इसका जो ऑपोजिट में जो है दैट इज द होमोलोगस क्रोमोसोम. इट्स अ मेल हेमिजाइगस. हाँ, सब रिसेसिव ही है, उसमें कोई ये नहीं है. सो ईसी, सो इकाइनस होगा और क्रॉस वेनलेस होगा, लेकिन उसका नॉर्मल ब्रिसल्स होगा. सो इकाइनस क्रॉस वेनलेस एक में होगा, दूसरा में सिर्फ स्कूट रहेगा. सो जो डेटा, द डेटा विच यू हैव गॉट, वो क्लास 3 एंड 4 है. वो ए सिंगल क्रॉसओवर है क्योंकि वो सबसे कम नहीं है. इट इज नॉट द लीस्ट. द क्लास विच इज 3 एंड 4 इज अ सिंगल क्रॉसओवर. 100 समथिंग, 130, 140 कुछ ऐसे था इन क्लास 3 एंड 4. ये लिस्ट नहीं है जो 1 एंड 1 डबल क्रॉसओवर नहीं मिल रहे. सो दिस ऑर्डर इज नॉट द राइट ऑर्डर. सो नेक्स्ट ऑर्डर तो यू विल ट्राई टू फाइंड, अगर ईसी, सीवी और एससी का ऑर्डर, इफ द ऑर्डर इज लाइक दिस, ईसी सीवी एससी, उसका डबल क्रॉसओवर क्या होगा? यू हैव इकाइनस एंड स्कूट इन वन. इसमें इकाइनस क्रॉस वेनलेस मिला था, इसमें इकाइनस स्कूट मिलेगा एंड इसमें ओनली क्रॉस वेनलेस मिलेगा. इधर क्रॉस वेनलेस मिलेगा, नहीं तो इकाइनस स्कूट. सो ये भी तुम जब, इफ यू लुक एट दिस, इकाइनस स्कूट फॉर वन एंड क्रॉस वेनलेस फॉर द अदर इज क्लास 5 एंड 6. ये भी लिस्ट नहीं है, ये भी 100 के कुछ ऊपर था. सबसे ज्यादा भी नहीं था, सबसे कम भी नहीं था. सो दिस इज द डबल क्रॉसओवर. दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट जीन ऑर्डर. तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, एससी ईसी सीवी, जो एक्चुअली इस प्रॉब्लम में ऐसे ही दिया गया था, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मैप्ड इट फॉर सिंप्लिसिटी. उसमें क्या होगा, एससी ईसी सीवी किया. अब ये जीन, इट द मिडिल जीन स्विचेस. सो यू फाइंड स्कूट क्रॉस वेनलेस इन वन एंड इकाइनस और एक में मिलेगा. सो स्कूट और क्रॉस वेनलेस एक एंड इकाइनस में 7 और 8, एंड दैट इज द डीसीओ विच इज द लीस्ट. कौन घुस रहा है? So many disturbances coming. So इससे पता, आर यू क्लियर अबाउट दिस? ये मिडिल जीन में आ गया कि सबसे कम वाला आ गया? फेनोटाइप, फेनोटाइप, व्हाट फेनोटाइप यू आर लुकिंग? यू आर लुकिंग एट अ फेनोटाइप.
ये वाला देखो, स्कूट क्रॉसवेनलेस एंड इकाइनस, scoot crossvenless and echinus. So the moment you get this, you note the middle gene. Now you have already calculated the distance between SC and EC, recombinant say. That is 9.1, and EC and CV, it is 10.5. And this is the genetic map. Okay, so you have made a genetic map. Clear? Hello? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. So any questions? No, sir. থাকলে পরে জিজ্ঞেস করো। Okay, sir.